अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रास्ता सत्वा नॉलेज सिटी माधवपुर हीरोज ऑफ हैदराबाद अवार्ड्स 2025 जो के टैलेंट की फतेह एक मुनफरिद शनाख्ती प्लेटफॉर्म पेश करता है जो ऐसे अफराद को मना रहा जो माशरे शहर को 13 ज़ुमरों में 75 से ज़्यादा अवार्ड हासिल करने वालों के साथ तश्कील देते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये प्रोग्राम अमल में आया है और इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर सीवी आनंद कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद, गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर राज पी नारायणम, आमिर अली खान एमएलसी ने शिरकत की। फाउंडर ऑफ टीओटी मोहम्मद फयाज ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका हाईटेक टीवी से बात करते हुए क्या कहना है। हाईटेक टीवी की ये खास रिपोर्ट। हाय, मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। मैं फ्लैम्स ऑफ टैलेंट का फाउंडर हूँ। फ्लैम्स ऑफ टैलेंट इंडिया का वन ऑफ द फ्यू प्लेटफॉर्म है जो 100% जूरी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। इसका ये मतलब हुआ कि नॉमिनीज नॉमिनेट करते हैं और हमारे जूरीज जो है, जो थॉट लीडर्स रहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रहते हैं, ये लोग नॉमिनीज का डिसाइड करते हैं कि वो लोग अवार्ड के हकदार है या नहीं। उसके ऊपर हमारे एक सेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो एक्चुअली उसको ऑडिट करते हैं। उसके बाद हम फाइनल लिस्ट निकालते हैं। ये साल करीबन 1000 से ऊपर नॉमिनेशंस आया और 70 के आसपास अवार्डीज हुए। ये हमारा यूएसपी है कि नॉमिनेशन से अवार्डी रेशियो जो होता है वो 7% 8% के रेंज पे रहता है। ये इंडिया में और कोई नहीं कर रहा है और ये हमारा चौथा साल है और आई एम वेरी हैप्पी कि मीडिया लोग आए और ये इवेंट को कवर करें और भी हमें इंस्पायर करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए। शुक्रिया। नेक्स्ट ईयर क्या प्लान है? नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद है कि नॉमिनेशंस एटलीस्ट 2000 या 3000 के ऊपर ही जाएगा। तो जूरी का काउंट भी बढ़ेगा, इवेंट भी थोड़ा बड़े वेन्यू पे करेंगे। हमारा 2 इवेंट होता है, एक है वुमेन ऑफ इम्पैक्ट जो बैंक्वेट ड्रिवन रहता है, जो कॉर्पोरेट इवेंट होता है, और हीरोज ऑफ हैदराबाद हम क्लब्स में करते हैं, थोड़ा क्लबिंग कैजुअल वाइब्स देने के लिए, और हर बैकग्राउंड के लोग आके अवार्ड्स लेते हैं। ऑल्सो हीरोज में कोई सोशल एक्टिविटी? काफी ज्यादा सोशल एक्टिविटी है। एक जो हंगर मिठा रहे, टर्मिनेट हंगर फाउंडेशन चलाते। एक जो है वो कैंसर ड्रिवन इनिशिएटिव्स करते हैं कि जो कैंसर ड्रिवन पेशेंट्स को फ्री में ट्रीटमेंट देते हैं। एक एंटरप्रेन्योर्स है जो सिर्फ 20,000 रुपए से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया और आज मल्टीपल ब्रांचेस है, मल्टीपल ऑफिसेस है दुनिया भर में। तो काफी इंस्पायरिंग स्टोरीज है। सोशल इम्पैक्ट के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में भी स्टोरीज है। एकेडमिया, स्कूल्स के जो एकेडमिक हेड्स है, काफी नॉमिनेशंस आते हैं उनमें, उसमें से भी बेस्ट को हम हाईलाइट करते हैं, स्पॉटलाइट देते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी का ये मतलब हुआ कि कोई जैसे ग्रीन रिफॉर्म करता है, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स लेके आते हैं हैदराबाद सिटी के लिए, उनको भी हमने अवार्ड दिया है। तो 13 डिफरेंट कैटेगरीज है। 13 डिफरेंट कैटेगरीज में सिर्फ 70 लोगों को अवार्ड मिला है और इंशाल्लाह कोशिश ये है कि आगे भी और नॉमिनेशंस आए और इन अवार्डी को देख के और भी लोग कोशिश करें कि कुछ इंस्पायरिंग करें अपने सिटी के लिए और हैदराबाद की ग्रोथ के लिए। शुक्रिया। పిలిచి వారికి అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చాలా అవసరం. ఎందుకంటే చాలామంది వారి వారి రంగాల్లో ఎన్నో మంచి పనులు చేస్తుంటారు, కానీ గుర్తింపు అనేది ఉండదు. వాళ్ళు గుర్తింపు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయరు. అటువంటి కాంటాక్ట్ ఎవరైతే ఒక లక్ష్యంతో ఈ అవార్డు పొందాలి అనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తారో వారి హీరోస్ కావాలని నేను భావిస్తున్నాను. ఎవరైతే ఎటువంటి లాభం లేకుండా, ఎటువంటి ఆలోచన లేకుండా జస్ట్ సేవ కోసం, సర్వీస్ ఓవర్ సెల్ఫ్ అనే మోటోతో చేస్తుంటారు స్వచ్ఛందంగా, వారికి ఏదో వల్ల గుర్తింపు లభిస్తుంది. సర్వీస్ లో ఉండొచ్చు, ఆర్మీలో ఉండొచ్చు, పోలీసులో ఉండొచ్చు, సమాజంలో ఉండొచ్చు, ఐటీ సెక్టర్లో ఉండొచ్చు, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. సో అటువంటి వారిని ఇచ్చే ప్రక్రియ మీరు ఈ సంస్థ ద్వారా ప్రారంభించినందుకు వారందరినీ నేను అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇటువంటి చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారానే ఎవరైతే మంచి పని చేస్తున్నారో వారికి వారి ఆరోగ్య సేవని ఇస్తే ఇది ఒక of Hyderabad is here, Sri C.V. Anand,
Yes, Commissioner of Police Hyderabad. So I request you, sir, to please step forward as we'll be welcoming him. I request our founder, Mr. Mohammad Fayaz, to please step forward to do the honors in presenting the bouquet to our chief guest, Shri C.V. Anand. Yes, ladies and gentlemen, I always call him the Singham. The name rightly apt for him. And now, sir, you'll have to talk to all of us, speak a few words. As you can see, there are a lot of musical instruments around you. Let me tell you, ladies and gentlemen, he is very fond of music and he's also talented, I should say. Singing wise, we'll not make you sing here, sir, but then he makes sure that people, in his cadre also bring in that creativity. He inspires a lot of people around him. So it's just not about his work as a police officer, but he makes sure that he looks into all the other departments of creative fields. So over to you, sir. Thank you so much for the kind words. Amir Ali Khan Sahab, Raj, and others who are present here today. And I hope the awardees are here. All of you are awardees? Okay. Congratulations to you at the outset. I'm very happy to be here because when they came and explained the concept to me, I first queried them about how did they go about finalizing this list. Because, there can be a lot of discretion, there can be a lot of partiality, and I wanted to know who has done the job. Then they explained to me that it was an independent jury, and I can see the names there: Rashi Srivastav, Pavan Saribella, Arun Prasad, and Srinivas. And the process they followed in identifying the heroes of Hyderabad. So here I am. I consider it a privilege to award the heroes. As you know, heroes are those who make those small differences, who put self above the service, is above what they consider for themselves to be important in the service of society without aspiring for the end, for an award. They keep serving, and in finality, they make a difference to the society around them. There are several people like this. It may be right from a police constable, a home guard, to the people who work in the fields, the small-time employees, an auto driver who has done something out of the way, who has served in a manner in which he has endeared himself to the public all around. So these are the people who make a difference. We have several such people in the world, in the country, and how, like person like Mother Teresa, if you recall what all she has done, then we can come to an understanding of what a hero can be. There are several amongst us who do that, but those who do with a selfish interest perhaps may not be eligible for this category. So the path which was followed to identify such heroes